And now this Make in India product is being sold worldwide through Horiba. What we basically do in a hematology analyzer. In hematology analyzer, whether it is a 3-part or a 6-part, if we get a flag, we make a smear, we stain the slides and see it manually. The manual microscopy may be inaccurate, non-standardized, inaccessible. I had a feeling that my staining process and my slide smear making is very good. But when I purchased this instrument, I realized that my slide making, my smears are not up to the quality control and therefore got rejected by this system. Here comes the role of a quality control. That means in a smear or a smear staining should be also having a quality control. The solution in the current scenario is SIG-TOEFL AI 100. The solution, we can get faster results, we have a cell library, we can get unlimited storage, accuracy, faster result, remote access and accuracy. By cell library, I mean that if I get stuck up somewhere, I used to go through the books or consult my senior by sending the slide. Sir, please identify the cell. I failed to identify it. In this case, you have a cell library. What happens when you put your slide inside? It identifies the area of cell analysis because your smear or your staining may not be proper. The image capture is done of the entire slide. WBC extraction, WBC platelet extraction, RBC platelet classification is done, report generation is done, and the report review. All reports are reviewed and made possible changes by a pathologist. The best part of it is this, that through this instrument, you send your report to the cloud and then get it verified manually, and then you pass and validate that report. In SIG-TOEFL, this is the method where you can also change the number of cells you want to count. Here, generally 100 cells of WBC are counted. If you want to get 500 counted or 600 counted, you can count it and then auto-scan it. The analysis report comes to you like this, which you verify, then get approved, and through the cloud you get it. For WBC, this is one report where there are 2 parts. One is default and one is library. By default, you get the automated system, the library they have, which has been done by Anand Pathology by Dr. Sujay Prasad. And the second part is my library, where I keep the cells which I have identified separately and form a library. In the neutrophils, you will get the band neutrophils, hypersegmented, reactive cells, eosinophils, IG, everything. Similarly, in WBC, you get the number of microcytes, normocytes, round microcytes, ovalocytes at one time. And you can check from the library whether your results are correct or not. Similarly, now comes the platelet report. This is the major part for which I purchased this instrument. Commonly in Patna, when I generate a report of automated Sysmex with immature platelet fragment, the doctor asks me again, do a manual count. As a microbiologist and pathologist, I know that if I don't have that much of time to screen and do, not from the slide, through the chamber, 100 test or 150 test. It is impossible for me because I run everything myself with my help of my son, who has now gone for his higher education, and my wife. It is not possible practically. And if then you have to depend on the technician who may not be knowing. Here in this case, you put the slide and you get an actual manual count. This is the best part of this instrument. This is basically the format which you are assigned.
You can get the RBC morphology, WBC morphology, platelet morphology, hemoparasites, impressions. Now they are going for the same system to be upgraded for urine, for body fluids, and for histopathology in few years' time. When you approve the report, get it approved. After updating the report, the pathologist should approve the same. The approve button is present on the top side. An email can even be sent to the clinician through this instrument. AI 100 helps to differentiate the laboratory from the general cluster of laboratories. If you are reporting a CBC with the cell depicted with the photographs, with the colored photographs, it totally differentiates you from the crowd that this pathologist or this laboratory is giving a CBC with the photographs, and the clinicians can know what is the cell present there and actually this CBC matches or not. Two cases I will just write about it here. This has been done by Anand Pathology, Bangalore, where the images were viewed by a pathologist in Bangalore and the diagnosis of a microcytic hypochromic anemia was given to the cell within 2 hours. It's a normal slide, basically iron deficiency. It's not a major issue, with a hemoglobin of 7 grams. In the second case, a 50-year-old male patient presented with fever, bone pain, and organomegaly. The hematology analyzer flagged around 22% blasts, 24% LUC, large unstained cells, mandating a manual microscopy reviewed by an expert oncopathologist. AI 100 report flagged it 54% blasts, backed by a visual evidence. The pathology confirms that this is a case of acute leukemia and releases a report with accurate blasts. Thank you everybody for giving a patient listening. Any questions? Any questions? I would like to say a few words. Thing is that AI is the next frontier. Medical field is the next frontier. But by this, I will say, job of pathologist will become extinct. I'm saying it to you, it's going to become extinct because somebody sitting in Delhi will be reporting all the slides. Your skill has been put a price. I will. Am I right, sir? I will reply to you. There was a time when we started doing, in the college days, everything was manual. Then we shifted to instruments, and the same question was put in front of all of us, that pathologists or microbiologists will extinct. The difference now, what we are seeing in the microscope, will be seen on a screen, on a computer screen. And regarding extinction of pathologist and microbiologist, I beg to differ. We don't give that wholehearted commitment to our own subjects, which we study. That is the first point. This has given rise to the mushrooming of the technician-based labs. And the clinicians, we have exposed ourselves in front of the clinicians as beggars, that we are technician dependent. Therefore, they are now utilizing us, and the clinicians are making us extinct, not the technology. The technology is there. The clinicians are making us extinct because we bow down to them by giving cuts and commission, and they have not started their own side business as pathology, microbiology, and radiology. May I add something more? If you have digital microscopy and AI coming in pathology, you are also seeing the entry of digital stethoscopes too. Now will the cardiologist start saying that we will be replaced? Now, A single machine can't somebody extinct. The problem is whenever you go for some modernization, the same question was raised. You people might not be knowing that when computers started
entering into India for the first time, the same aspersions were raised. You will always have your position, be rest assured. As long as आप अपने प्रोफेशन से ईमानदार हो. Man behind the machine. Exactly. I'll say something. I'm always for technology, but as a pathologist, your main is whatever your standpoint is. Your morphology is you are a morphologist, right? And that morphology part is being taken away. I want to say, Tata Memorial Hospital has also done telepathology during Corona. They did this, and still they are planning to extend post-Corona days. The thing is, if we are dedicated to our work, and honestly we are doing, we will need only in few cases where there are gray areas, there are problems. Okay, no pathologist in this world is perfect. Even for histopathology also, sometimes there are doubts we discussed with our colleague. So this, if you are doing anything, mostly if you are dedicated, we will do it. Some cases, 5%, 10%, we can't do or there is problem. Because if you are opening lab, we can open many things, even if we are not doing histopathology. We do biochemistry, hematology, we have to do that. Nah? But some cases, if required, we can take help of this digital microscopy. But mostly, we should try to do what can we do. And dedication, honesty is very important. Just one more point, Dr. Anurag. In orthopedics and surgery, the robotic surgery has been introduced. You sit in front of a computer and a robotic surgery is done. Is the surgeon is getting replaced? Is the orthopedician getting replaced by a technician? No, because he has kept that technology within himself. But we have opened our subject and profession in front of the world. That is the difference. That's what I'm saying. The thing is, you should be approaching this thing with caution, and you should be perfect in your morphology. Because ultimately, that even when I went to KCIPM this year, the focus was on AI. Artificial intelligence is coming on in a big way. Histopathology is still far away, but hematology, they are coming. So, and nobody is perfect, and even the senior most pathologist who is experienced in hematology have a difference of opinion with other people. So it's like we have to perfect ourselves, because ultimately, even if the machine is giving something, it is trying to learn from you. Whatever image bank you are giving, whatever you are classifying as blast, it will remember it for the eons. So you have to make yourself perfect, and you have to position yourself in that way. We have to position ourselves in that way that, okay, whatever machine is giving, we are the ones who will approve it. Yes, Or man behind the machine. Man behind the machine. that's what I'm trying to say. Who is correct? Yes. The person will say, yes, this is correct. So then, in a sense, his apprehensions are not that unfounded, sir. With the advent of these corporate labs and labs coming from pharma companies, it is only natural that we have a few apprehensions. But to deal with it, सबसे पहले आपको अपने आप को ही मजबूत करना पड़ेगा, अपने को इम्प्रूव कीजिए and don't compromise. Let the machine guide you. Don't let the machine guide you. You should. Machine comes later. Machine or your skill comes later. जो आप अपने day to day profession में the compromises you do away with them, आपका आधा problem ऐसे ही solve हो जाएगा. आज तक एक चीज मैं बताता हूँ, मैं काफी लेबोरेटरीज देखा, सीखने की कोशिश किया, लेकिन मैंने कहीं एक भी स्लोगन नहीं देखा कि ये पैथोलॉजी दिल से आपकी सेवा में.
It has to be from heart. And this is my logo written on the gate. Gitanjali, dil se aapki seva mein. Thank you, sir. It was a great talk. You are a source of inspiration for most of us, and it was a privilege chairing a session with a talk from you. Thank you, sir. Thank you for such detailed study about the innovations in pathology with AI. Though I also have apprehensions about AI a bit. I agree to that. So now I would like to invite Dr. Niaz Ahmed, sir, to kindly felicitate his guest speaker. And Dr. Preeti Ranjana ma'am to kindly felicitate the chairperson, Dr. Anurag, and Dr. Sunit sir. Can we have a round of applause, please? यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूँगा। Sir. हाँ, नहीं। मुझे जब पता चला कि चंदन के पेड़ दिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये दिमाग में किसके आया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमको दिया जा रहा है कि मेरा घर भी सुखी हो और चंदन भी हो, एंड चंदन का प्रोपगेशन हो। उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं। Whoever has thought it is excellent idea of giving talks. Kumar Sunit and Satyendra, side of Kumar Sunit. Not exactly, sir. It was my better half who happens to be a Arey horticulturist. वाह 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 Nothing for. Then please convey her. नहीं सर, आप वेट करके रहे। Thank you, sir. Now coming on to the last scientific session of the day, I would like to invite the guest speaker, Dr. A.K. Sinha, sir, MD Pathology, alumnus of Darbhanga Medical College and Hospital, and he has already also worked at RML Hospital, New Delhi. He established Maurya Central Diagnostic Center in Purnia. He has been ex-vice president of IMA Purnia as well as IAPM Bihar. So, he will be speaking on novel biomarkers of diabetes. For this session, is to be chaired by Dr. Niaz Ahmed sir, Kanihar Medical College, and Dr. Rakesh Prasad sir, Microbiology, Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pavapuri. Thank you, sir. Over to you, sir. नीचे वाला से भी पढ़ेगा। ठीक है With your permission, should I start, sir? Good morning, everybody. Dignity on the dais and off the dais. Today, my topic is
novel biomarkers of diabetes. Actually, diabetes is a chronic disease caused by either insulin deficiency or insulin resistance. Insulin is there, but body is not able to utilize it. Diabetes is a global problem. Unfortunately, India is the capital of diabetes. Diabetes is due to autoimmunity, epigenetic factor, genetic factor, and multiple inherited triggering factors like sedentary lifestyle, obesity, economical and nutritional transition. There are 4 types of diabetes. Type 1 diabetes, insulin deficiency due to some autoimmunity disease. Type 2 diabetes, insulin resistance, body unable to use the insulin. Other specific type of diabetes, secondary form of diabetes, genetic defects due to beta cell function, genetic defect due to insulin action, disease due to exocrine pancreatic disease like acute pancreatitis, chronic pancreatitis, endocrinopathy, drug or chemical induced infections, and common forms of immune mediated diabetes. Other genetic syndrome associated with diabetes, maturity onset diabetes of young, MODY, monogenic defects can affect beta cell, and gestational diabetes diagnosed during the time of pregnancy. Now biomarkers. Now question, what is biomarkers? Biomarkers is biological molecules present in some our body fluids like blood, plasma, serum, urine, saliva. These molecules detect the subclinical and clinical stage of disease, which helps our clinician to make the diagnosis of the disease and formulate the line of treatment and monitor it. Classical biomarkers for type 1 diabetes and type 2 diabetes. Most of the biomarkers are common for type 1 and type 2 both, like glucose, SU1AC, insulin, C-peptide, glucagon, and cortisol. Some specific biomarker for type 1 diabetes, GAD65, insulin, associated diabetes, autoantibody, islet cell autoantibody, zinc transporter. For type 2 diabetes, specific markers are fructosamine, glycated OGTT, 1,5-AG, adiponectin. Blood glucose levels reflect interaction of multiple regulatory pathways of the body. Glucose production in the body are 3 sources. Dietary intake, break down in the intestine and absorbed in the digestive system. Gluconeolysis in the liver, gluconeogenesis in liver and kidney, from non-carbohydrate source like the amino acids and lipid. Glucose uptake in the body is either insulin dependent or non-insulin dependent. Insulin dependent example is muscles and fat. Non-insulin dependent is brain. Glucose metabolism is regulated by 3 interactions of the hormones: insulin, which stimulate glucose uptake and reduce glucose production; glucagon, which inhibit glucose uptake and stimulate hepatic glucose production; and some counter-regulatory hormones such as cortisol, growth hormone, epinephrine, norepinephrine, which also inhibit insulin action and increase blood glucose levels. This is diagrammatic of the glucose metabolism in the body. Dietary intake of the carbohydrate increase blood glucose levels.
increased blood glucose level stimulates pancreas. Pancreas secretes insulin. This insulin has two actions in the liver. It causes gluconeogenesis, glucose converted into glycogen. And other on the muscle and fat where glucose uptake is taken. This glucose conversion into glycogen and glucose uptake by the muscles and fat causes the low blood sugar in the peripheral blood. This again stimulates pancreas. Alpha cell of pancreas secrete glucagon. This glucagon produce cause glycolysis, and gluconeogenesis causes glycogen converted to glucose. This glucose again comes in our circulation. And one another regulatory hormone is adrenal glands. Which is the counter-regulatory hormones which I have discussed. जाता है ये epinephrine, norepinephrine. This again stimulates pancreas, causes liver, causes glycogenolysis, gluconeogenesis, glycogen converted to glucose. Now come to the HbA1c. Most commonly used biomarker to diagnose pre-diabetes and diabetes. HbA1c reflects chronic glycemia rather than glucose at a single point. According to American Diabetic Association, the criteria for the diagnosis of the diabetes and pre-diabetic HbA1c level for diabetic HbA1c level equal to or more than 6.5%, and for pre-diabetic it is 5.7 to 6.4%. HbA1c formed by glucose attached to the amino terminal beta subunit of hemoglobin, or in other words say the glycation of the hemoglobin. Some advantage and disadvantage both. As a biomarker, its advantage is convenience, as fasting is not required, pre-analytical stability, less day-to-day perturbations due to the period of stress and illness, reflect chronic exposure of glucose, particularly it is useful for counseling of the lifestyle modification. But disadvantage is moderate sensitivity in diagnosis of diabetes compared to OGTT and fasting plasma glucose. Non-consensus which cut-off points for HbA1c thresholds for pre-diabetes. Does not consider ethnicity, BMI and sex. Is significantly HbA1c alter levels higher in the African Americans, Hispanics, Asian and Pacific Islander. 0.3% HbA1c level is high in the black male and 0.4% is higher in the black woman in comparison to white. Changes in the production of the rate of circulating red cells lifespan and its variance. There is a difference in the HbA1c level, like the HbS, HbC, HbD and HbE. Elevated HbA1c level is found in the iron deficiency anemia, folate deficiency, severe hypertriglyceridemia and uremia. And low HbA1c is seen in hemolytic anemia and blood loss. By picture I want to try to understand that improving the glycemic control reduces risk of long-term diabetic complication. Even 1% drop of HbA1c can reduce the long-term diabetic complication. For example, if 43% drop in low extremity amputation and fatal peripheral vascular disease, 37% drop in microvascular disease like the neuropathy, retinopathy, nephropathy, 19% in the cataract extraction,
16% drop in the heart failure, 14% myocardial infarction, and 12% is stroke. So there is a reduction of both macrovascular and macrovascular complication of diabetes. Insulin. The insulin is a dominant glucose regulatory hormone peptide. In nature, secreted at beta cells within the pancreatic islet of man. Beta cells regulate the production of insulin in response to plasma level of glucose. Minocytes, isocytes, circulating in plasma. But glucose is the main regulatory insulin secretion is stimulated by collecting a group of metabolic hormones present in the intestine in response to meals. One very big meals taken, the incretin starts to stimulate the secretions of the insulin. Insulin plays a role in the glucose uptake by muscle and adipose tissue, decreasing gluconeogenesis in the liver and kidney, stimulate lipogenesis, decrease lipolysis, stimulate protein synthesis, and prevent proteolysis. In type 1 diabetes, insulin deficiency occurs due to autoimmune destruction of the pancreatic beta cell. This is strongly associated with HLA antigen, which determine the islet antibody. Insulin has multiple metabolic effects over carbohydrate, protein, and fat, result in hypoglycemia, protein synthesis, lipogenesis, respectively. In type 1 diabetes, exogenous insulin not only keep the safe range of the blood glucose level, but also it regulates the diverse aspects of the cellular metabolism. Here by data I am showing that the action of insulin on carbohydrate by stimulation of enzyme produce glycolysis, glycogenesis, HMP shunt. Next effect is hypoglycemia. On lipid stimulation of enzyme, fatty acid synthesis, cholesterol synthesis, triglyceride synthesis. Next effect is lipogenesis. On protein, action of insulin causes stimulation, RNA polymerase inhibition causes transaminase anabolism. Now the C peptide. The short 31 amino acid polypeptide connects insulin A to B chain in pro-insulin molecules. Although it does not direct effect in the glucose metabolism, it is a marker for endogenous insulin production. Low levels indicate pancreas is producing low or no insulin. High level say the insulin production is there, but body is unable to utilize the insulin. That is the type 1 diabetes. Its normal fasting range is 1 to 4 ng per ml, which rise after meals. Glucagon, a peptide hormone produced in the alpha cell of pancreatic islet. Glucose level falls, secretion of glucagon increases. When glucose level falls, glucagon increases. It acts on liver cells to promote glycogenolysis, gluconeogenesis, increase blood glucose levels. Effects on lipid metabolism causes promote lipolysis. Secreted during stress, such as exercise, prevent hypoglycemia. During the exercise, blood sugar level falls, glucagon secretion increases, which again raises the glucose and nullify the effect of the hypoglycemia. Postprandial glucose secretion also contribute to milk induced sedation. आपको लगता है जब खाना
हो गया खाना कब खाया जाए, बंद किया जाए. In type 1 diabetes, plasma glucose response are abnormal. All the basal level of glucagon is high, but glucagon secretion response to hypoglycemia of inadequate. This increases the severe hypoglycemia. Elevated glucose level can also promote ketogenesis, diabetic ketogenesis. Cortisol, steroid hormone secreted by renal glands in response to cues from the hypothalamus and pituitary HPA axis. Cortisol level gives general physician. It is higher in the morning and lower in the evening. Increase in glucose level is stabilizing insulin action. Increase hepatic glucose reduce glycogen synthesis. Decreasing glucose uptake in a skeletal muscle. Counter-regulatory response of hypoglycemia. If low cortisol level, severe and prolonged hypoglycemia, high levels of cortisol, increased glucose level and increased lipolysis and deposition. Physiological and pathological stress increases stress to impair insulin sensitivity. Individual with type 1 diabetes, increased cortisol, reduced illness, increased glucose and increased risk of ketoacidosis. Measuring the cortisol level helps to avoid the complication like the diabetic ketoacidosis. The पानी देना है. Now, a specific biomarker for type 1 diabetes. That's the GAD65, insulin associated antibody, islet cell activity, zinc transporter. Now, it is clear from various studies the persistence of presence of two or more islet autoantibody is near to certain predictor for clinical diagnosis. The rate of progression of the diabetes depends upon at which age group you have detected the autoantibody, detection number of autoantibody, autoantibody specificity, and autoantibody titer. Now, question is, should we go for testing only in the younger age group? Of course no, because we have a slowly evolving form of the type 1 diabetes, LADA, latent autoimmune diabetes of adult, and lady, latent autoimmune diabetes of young. LADA is classical of type 1 diabetes, mellitus associated with other autoimmune disease like the vertigo, Hashimoto's thyroiditis, pernicious anemia, Addison's disease, etc. GAD65, glutamic acid decarboxylase, an enzyme which helps key role in the production of the neurotransmitter GABA in the brain and pancreas. Type 1 diabetes, body immune system mistakenly attack and destroy the pancreas beta cells, leading to lack of insulin production. Autoantibody GADA is a strong biomarker for type 1 diabetes and can be detected before onset of the clinical symptoms. आपको नॉर्मल ग्लाइसीमिया है, लेकिन गाढ़ा प्रेजेंट हो जाएगा. अगर गाढ़ा प्रेजेंट है तो आप क्लिनिशियन को ये आगाह करें कि नहीं, इट इज ए प्रॉन केस ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज. It should be prone case of type 1 diabetes. GADA antibody is also associated with the insulin associated antibodies, islet cell antibody. Like in some cases, GAD65 is present, but presence is not the diabetes. So, I have explained before, at least 2 autoantibodies is required to diagnose the type 1 diabetes. Insulin associated a specific biomarker for type 1 diabetes because it is not typically present in individuals with other diseases. Some individuals with type 1 diabetes may have not insulin associated antibody. Presence of GADA, AIA,
ICA, a strong predictor for diabetes. Fructosamine, a ketoamide created in glycation of total serum proteins, primarily albumin. After increasing with high level of glucose, alternate glycemic marker for diabetes reflect average blood glucose concentration over a period of 1 to 4 weeks. Useful clinical markers of short-term glycemic fluctuation of the glucose control. Glycated albumin. Glycated albumin and measured by the ratio of glycated albumin to total albumin. Found to be superior glycemic index to control than the HbA1c present within the renal failure, hemolytic anemia, those receiving the blood transfusion. GA may be artificially low in individuals with increased BMI, body fat mass, and visceral adiposity. OGTT. OGTT can be pre-diabetes as well as clinical diabetes. The level of the range of the fasting blood sugar level 100 to 125 is, and impaired glucose tolerance 140 to 199 mg per dl is for the impaired glucose tolerance test. Measure of fasting 2 hours plasma glucose levels strongly correlated with insulin resistance and secretion than the HbA1c. Important information regarding the risk of HbA1c, but or fasting plasma glucose cannot give. OGTT is variable. Disadvantage of OGTT, it is variable, invasive and time consuming. Because during the perturbance of life, OGTT may be high or low. It is invasive, multiple samples are required, so many times you have to take the blood sample. And it is time taking. Patients have to sit in the laboratory for the more long period. Inconvenient because it requires fasting, so day-to-day proteinuria age. A15 and hydroglucositol, and dietary monosaccharide identified as the pre-diabetic marker plasma concentrations are inversely correlated with the plasma glucose. It is useful biomarker as it reflects glucose level within the past 10 to 14 days. Plasma 1,5 Ag levels can change based on the dietary habit, sex and race. Levels are also affected in the renal hemodynamics or treatment with SGLT2 inhibitor. Adiponectin is a adipokine secreted by adipocytes, is well homeostatic factor in regulating the blood glucose, lipid metabolism and insulin sensitivity through anti-inflammatory, anti-fibrotic and antioxidant action. It is independent of predictor of diabetes. Independent predictor of diabetes. Lower levels of bacteria are associated with the increased insulin resistance, obesity. Higher levels have been related to lifestyle intervention, use of diabetes. Adiponectin level were directly correlated with the insulin sensitivity and indirectly correlated with insulin secretion. Take up home message. Each and every lab is flooded with the various types of diabetes. Fasting blood sugar, BP blood sugar, OGTT are the best diagnosing for diabetes. HbA1c used monitoring the glucose control, but used with caution in anemia. C-peptide estimation is important for distinguishing endogenous and exogenous source of insulin in case of hypoglycemia. Cortisol, surrogate marker for stress and insulin production. Detection of one antibody is not sufficient for diagnosis of type 1 diabetes. Adiponectin level is marker of insulin resistance and it is reduced in obese patients. MODY gene marker, MODY gene is performed in the genetic laboratory. Thank you, sir. Nicely presented and well explained lecture on the topic of pathogenesis and recent advances on diabetes mellitus. Thank you, sir.
diabetes mellitus is very prevalent in our society, and early diagnosis and screening for complication can benefit diabetics in many ways. Thanks for your lecture. Any question from the audience? Thank you. With this, we come to the end of the scientific session. And for the felicitation of the guest speaker, Dr. A.K. Sinha sir, I would like to invite Dr. Anurag sir from Purnia to kindly felicitate him on a dais. And Dr. Akhilesh Kumar from GMC Betia to kindly felicitate our chairpersons. Can we have a round of applause, please? इस बार बेटा से नहीं लिए सर, अगला बार उल्टा कर दे। वही तो हम बोलेंगे, हमसे क्यों करवा? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Dr. Anurag would like to take 3 minutes. He would like to speak something. So, over to you, sir. गुड मॉर्निंग। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट लूँगा। मैं एज अ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट बोलना चाह रहा हूँ। It's nothing to do with academics. So all of you who are practicing pathology in outside, उनके लिए मैं एक प्रपोजल लेके आया हूँ एक्चुअली। प्रपोजल ये है कि जोर से बोल सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रपोजल ये है कि what we are facing right now is advent of many private laboratories. ठीक है? And what problem is there is like whatever samples we are not processing in our labs, we are feeding them. They are taking our special samples and they are coming into market and hampering our business also. So to counter that, I have a proposal. I would like to ask your suggestions, and I would like to ask, or like-minded people can join and form a group. It could be a pathology group, that whatever samples you are processing, whatever special samples you are processing in your lab, and I don't have that amount of test in my lab, so we can exchange those samples and run the test in our lab. We should not share the samples with these multinationals or corporate labs. So this will help us in 2-3 ways. First thing, we will be assured of our quality. Second thing, we will be able to stand up against these corporates. Okay, and slowly, when those samples or the number of those tests rise in our lab, we can start those tests in our lab also. So I would like like-minded pathologist people should join and form a grid like of thing. And whatever big lab is there in their region, they can share the samples with their whatever
person of choice. So whoever senior pathologists who are practicing in outside, they can put forward their views on this. This is something I want to like take forward. Sir. Mike. Dr. Anurag, it's kudos to you to that you have started this movement. First of all, I am practicing this because few of the pathologists who are not in Patna are sending. Yes, sir. We were also sending to you. You were also sending. I think your father was sending, not you. And 5 or 6 laboratories outside Patna are sending those samples. We give the report in the minimum possible time by WhatsApp. Yes. The second thing I will say, who has allowed these networking laboratories in Bihar? We have allowed, sir. We have When I started practicing, ThyroCare came to me because I started my practice with just a mere 5,000 rupees. I was doing nothing, basically nothing. And ThyroCare came and told me that I will be giving you these advantages. I refused. Lal Path Lab wanted to change the name of my laboratory and said that it will be Gitanjali Lal Path Lab. I refused. I refused Ranbaxy. So we are the first person. That's like the Indians. We have allowed the East India Company to enter our state. And finally it will turn into a British Raj. That's what I'm proposing, sir. We will have to This stand thing up. has to be done from your lab only. You come to my lab, there is a clear-cut indication written that these tests cannot be sent to networking laboratory. And please don't compare the reports of ammonia, PTH, and few other analytes. Growth hormone. Growth hormone, then growth hormone factor 1. These samples, if you are comparing with my laboratory or going for any court case, it cannot be entertained because these are the deteriorated samples which are going there. Yes. So each and everyone should That's what write I'm it, saying, sir. There should what be a it should be written properly because patients don't know till date. And in a 30-year practice, I have found that the villagers, the illiterates, are more aware and more literate in this thing. If they are told that please go to this laboratory or get it done in your place, they will go. Yeah. The literate people want a 7,516 rupees package to be done in 399 rupees. Yeah. It is the literates and we have to educate them. It's an excellent topic which you have raised. That's what I would like to ask for people who are You should like-minded, join. and you can put forward your views. One thing I want to tell, by helping them, these labs, We are the people who are sending them the special samples. what I am saying is they are taking that franchisee from any company and any person, and they are opening their lab also, their machine also. Many people are illiterate, many don't know. They come for कि मेरा टेस्ट कर दीजिए, वो टेस्ट वो अपने लैब में करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बाहर भेजते भी नहीं है और बहुत टेस्ट बाहर भी भेजते हैं. तो एक लैब भी हम इस्टेब्लिश करवा रहे हैं नॉन टेक्निकल पर्सन का, और आउटसोर्सिंग को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको हम लोग फायर में फ्यूल दे रहे हैं, उसको रन करने का हम ये दे रहे हैं. दूसरा चीज, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर सुशांतो बोस ने कहा रिगार्डिंग एनएबीएल का, तो उन्होंने मैनेजमेंट पार्ट शुरू किया, लेकिन आप समझिए एनएबीएल कैन हेल्प यू. एनएबीएल आपका लैब नहीं चलाएगा, वो 15189 करने में हेल्प आप एजेंसी से ले रहे हैं और कर रहे हैं तो मत कीजिए. अगर आप लग रहे हैं उसमें साथ कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि फिर आपका रिपोर्ट गलत आएगा,
आप कहिएगा हमने टैग लगा दिया 1519 एनेबल का और मेरा रिपोर्ट गलत था। इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड कोई फायदा नहीं है। और अगर मैंने देखा कुछ लोगों से बात किया कि जो 1589 या एनेबल कर रहे हैं उनका एनेबल कर रहे हैं चाहे कि 15189 कर रहे हैं तो उनका मार्केट जो है वो 20 से 30% बढ़ गया। और जब आप कहिएगा कि हम ये करते हैं तो अदर लैब जो डॉक्टर नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, वो उनको आप डायरेक्ट मार्क भी दे सकते हैं। एक ये भी हुए। थैंक यू। The second point I have to. One more thing, when you have told about NABL, there is a difference between ISO certification and NABL certification. Yeah, there is difference. In NABL certification, I get my hematology done in the scope, NABL, and I write NABL certified laboratory. But in case of ISO, it is all or none. Every department has to pass through the stringent rule, not like NABL. क्या आप मॉलिक्यूलर करा लिए और लिख दिए कि NABL और ISO is not a question, right? NABL और ISO का डिस्कशन का सब्जेक्ट वो ऑल एंड नन होना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम विद इन। यदि आप इंटरेस्टेड हैं सबको मत दे सकते हैं। ऐसे है कि NABL का ISO का टैगिंग जो है वो कुछ नहीं पब्लिक को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन जो पैथोलॉजिस्ट जो कि हमारे बीच के हैं जो हमको काम भेजेंगे हम उनको काम भेजेंगे उसके लिए नहीं है। वो गीतांजलि को जानते हैं, वो मौर्य को जानते हैं, वो सर के पैथोलॉजी डॉक्टर अजीत चौधरी को जानते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग का कहना है कि आप जो बाहर हम लोग जो भी टेस्ट भेजते अगर कोई भेजते हैं तो वो नहीं भेज करके जो अपने में जो करते हैं वहाँ भेजिए। उसका सबसे पहले उसका मार्केट खराब हो डाउन होगा, उसका इकोनॉमिक डाउन होगा और वो अपने आप विड्रॉ करेगा। उनके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर उनके लिए आज के रेट में अगर मान लीजिए दे स्पेंड 50 लाख और एक लैब बन जाती है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। दे स्पेंड 50 लाख और सारा सैंपल बाहर लेके जाते हैं। जब तक हम लोग उनके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे कि उनको PCR भी लगाना पड़ेगा, उनको ये भी लगाना पड़ेगा, उनको वो भी लगाना पड़ेगा, तब तक जो है वी कांट चैलेंज देम। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारा मार्केट बड़ा हो जाएगा अगर जो टेस्ट पूरे बिहार में नहीं होता, सपोजिटली NIPT नहीं होता है, ठीक है, तो वी कैन टॉक टू पीपल हु आर डूइंग NIPT एंड वी विल से कि हम पूरे बिहार का सैंपल हम आप ही को देंगे, हमारा कॉस्ट रिड्यूस करो और आप मशीन पूर्ण बिहार में लगाओ। तो इससे जो है हम अपनी क्वालिटी को हम अपने मतलब चैलेंज को बढ़ा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अजीत चौधरी सर को बोलिए आप इसको से। हम लोग का दुकान बंद होने पर है। अरे सर आपका दुकान क्या बंद? नहीं सर, देखिए सर, सर को दो बाइक। हम 16 और 23 40 साल से काम कर रहे हैं, सुनिए। और हमको मालूम हुआ लास्ट मार्च में कि आई एम रनिंग माय लैब विद माय पेंशन मनी। आई वाज रियली वरीड। क्या बात कर रहे हो? हाँ, देन आई मैनेज्ड इट। और अभी हम नहीं उससे चला रहे हैं, अपने से चला रहे हैं। हाँ, तो आपका जो डिजेनरेशन है बहुत हाई अमाउंट का है। सुनो, एक बढ़िया शीशा वाला बन जाए पत्थर, हाँ? लिख दो मोटका मोटका ISO और जितना है, कितना पैसा में मिलता है पूछ रहे थे। NABL और ISO आज के सर्टिफिकेट का कल क्या वैल्यू है? 30 बच्चा के एडमिशन के लिए CBSE में सर्टिफिकेट ले लिए और 3000 बच्चा पर पढ़ा रहे हैं, सर्टिफिकेशन लिए हैं 30 बच्चा का, एक क्लास का पढ़ा रहे हैं 3000। तो NABL लिख देने में क्या हार्ज है अपने से? हम बहुत जेन्युइन सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। आपको सुनिए ना, हमको मत समझाइए। हेयर DMLT के पास NABL है। और सुनिए, अभी बात हो रही थी कि किसी गधा के अकाउंट में साले को बहुत जीरो वाला रुपया भरवा दीजिए, साला विद्वान हो जाएगा। कौन पूछेगा? गायनी MD स्टूडेंट, नॉट ए जोक, गोज टू लाल किला, 10,000 रुपया देती है और हमसे पूछ रहे कि रिपोर्ट क्या है, रुपया तुम किसको दिए थे? क्या उसे पूछो। यहाँ मुफ्त का डॉक्टर बैठा हुआ है, तुम पहले पूछोगे बाद में पूछोगे। ये जांच हमको नहीं करने आता है। तो इतना मेस्मराइज है माथा हमारा। एक क्लिनिशियन, सुनिए, एक क्लिनिशियन क्या किया कि हमने T3 T4 TSS का रिपोर्ट किया, उसने उसको लाल किला में भेजा, उसके यहाँ भी वही रिपोर्ट था। फिर पेशेंट हुआ, मेरा माथा खाया,
तो हम ये डॉक्टर तुमको दोबारा जांच करवाया जाके उससे पैसा मांगो, हमको क्यों तंग करो यार। फिर वो फिर से मिल गया हमको फ्रेंड, हमने कहा डियर फ्रेंड आपका दुकान बंद हो जाएगा, मेरा चलते रहेगा, डोंट वरी। वो कॉर्पोरेट खोलेगा, एनी एमडी इज इक्वल। तो तुम हमारा गलती था तो किसी दूसरे मित्र से करवाते, या हम ही को कहते कि दोबारा कर दो, हम बिना पैसा के दोबारा रिपीट कर देते। लेकिन तुम जो लाल पीला को भेजे हो उसके डॉक्टर को देखे हो, 10,000 रुपया दिए हो, कोई डॉक्टर मिला है? द पैथोलॉजी का जांच स्टार्ट्स व्हेन द पेशेंट वॉक्स इन योर लेबोरेटरी। आप सलाह पूछ रहे थे एनीमिया का पैरामीटर, पेशेंट आया उससे नहीं जानकारी मिलेगी। तो पेशेंट है तीर घाटा, जांच हो रहा है मीर घाट। एडुकेट द पीपल, एडुकेट द पीपल, एडुकेट द पीपल, देयर इज नो वे आउट। दुकान हम खुला रखेंगे, मेरा दलान है, वहां जाते हैं, काम करते हैं, मन लगता है, मिलने जुलने लोग आते हैं। जो 80% 70% दे रहे हो, पास दिस फेवर टू द पीपल एंड टॉक टू द पेशेंट्स। हैव पर्सनल रैपो, हैव द पर्सनल रैपो, देयर इज नो वे आउट। और मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, और मैं जानता हूं कि सही को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। Not so easy to erase the correct things and truthful things. I am working hard, learning every day. दुकान बंद कर देंगे, इतना आसान है। हमने बेचने के भी गए बाजार में कि खरीदिए लो, हम ही को सलाह क्या करना है, काय को रुपया दे देंगे। हम बोले हमको कितना देगा? 1 लाख रुपया महीना देंगे ना, ये कहना नहीं फाड़े 6 लाख दो, 5 लाख, 5 दिन काम करेंगे, 6 दिन काम करेंगे। मैंने कहा और क्या है सर, सब स्टॉक फोन को निकाल दो। आजकल विकास हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। मेरा 40 को स्टाफ काम कर रहा है मेरे साथ, मेरा स्वीपर क्वालिफाइड है, मेरा स्वीपर इज स्मार्ट, ही नोज हाउ टू प्रोसेस सीबीसी फाइल। इज ये जोक? मेरा 6 को लड़का एफएनएससी कर सकता है, 8 को लड़का न्यूनेट में से ब्लड निकाल सकता है, उसको फेंक दे रोड पर। नहीं, हम नहीं बिकेंगे, उसको 40 ठोका निकाल दो, हमको निकाल दो। हम तो बिकने के लिए गए थे कि मेरे पूरे टीम के साथ लेबोरेटरी को ले लो, हम ही को तुम पैसा दो। आप तो बता रहे हैं, हम तो सीधे बिकने के लिए हम दुकान में गए थे। उसकी शर्तों पर हम बिक नहीं पाए, और उनकी शर्तों पे हम बिक नहीं पाए। अब बाजार की शक्तियां कह रही है कि दुकान बंद कर दो, मैं दुकान बंद करने नहीं जा रहा हूं। आई डू बिलीव ट्रुथ इज जीतेगा, इतना आसान नहीं है ट्रुथ को मार देना। चुपचाप काम करो, चुपचाप काम करो, चुपचाप काम करो, आपस में मिलजुल के रहो। पैसा से ज्यादा चमत्कृत मत हो। बेसी पैसा होगा तो तुम टाटा बिरला नहीं हो जाओगे, अडानी तो कतई नहीं। कम पैसा रहेगा तो भूखे नहीं मरो, मजा से काम करो, शान से काम करो, लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखो। हमने पूछा उसे एमडी स्कूल से, डॉक्टर को देखा को 10 रुपए देने के पहले। प्रणाम सर। ये मेगा इशू है। हाँ जी सर। कहाँ आंखें आपकी बंद हो जाती हैं? कॉन्फ्रेंस में है सर, बोलिए ना। कब आप देखना बंद कर देते हैं, कब झूठ के सामने सरेंडर करते हैं? उस झूठ को हराओ, लड़ो, पीटो, जी सर। कचुमर निकाल दो। 2 ग्रोथ हार्मोन भेजला से क्लिनिक चलते हैं, क्लिनिक चला है T3 T4 TSS से, TCDC से, ब्लड शुगर यूरिया से, तो उसे लेबोरेटरी चले है। एक आध गो थैलेसीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं बस। लेबोरेटरी रन्स विथ वेरी रूटीन टेस्ट, ओके, and let us talk the patients more amicably. Talk him pre-analytical, talk him during analytical, talk him post-analytical. तुम्हारा गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा। आपको जान जाओगे पता 25 साल का डायबिटिक है, थैलेसीमिया है, ये जान जो जाओगे कि हीमोग्लोबिन इसका कम हो रिजल्ट रहा बढ़ा हुआ है। तो तुम क्या लोग बता रहे थे थैलेसीमिया की वजह से है? 400 मिलीग्राम है, उसका यूरिन नेगेटिव है, समझ नहीं जाओगे। है तो बोन में ब्लड आरबीसी में क्या आता है, पेरिफेरल ब्लड में। Thank you. Okay. I am telling you the story. Finally, should I start on this? हम आप लोग का सहयोग होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हर एरिया में लोगों को डिजिग्नेट करेंगे। जहाँ बुलाओगे हम वहाँ जाएंगे। कुछ बोल रहे हैं हम भी, हम तो होता नेगेटिव ही कुछ बात बोलेंगे, आज पॉजिटिव जो उनका प्रपोजल से है उससे कुछ लोग का कम हो सकता है, कारपोरेट कुछ लाख कुछ का हो सकता है। बेसिकली हम लोग करते क्या चीजें, हम लोग जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका माइंडसेट है कि हम एक लैब खोलेंगे, उसमें साइन करेंगे, हमको पैसा आएगा। तो जब आपको खाली साइन ही करना तो आपको पैसा मिलेगा क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी में जो जांच हो रहा है मोर देन 80% बायोकेमिस्ट्री हो रहा है, जिसको कि मोस्ट ऑफ आदमी को अपने करने नहीं आता है।
बाकी 5% माइक्रोबायोलॉजी है, 15% हिमाटोलॉजी हो रहा है। यही सॉरी हिमाटोलॉजी नहीं, हिमाटोलॉजी साइटोलॉजी है। तो इस पर एक 15% पर कितना लोग डिपेंडेंट रहिएगा? किताब जो पढ़ रहे हैं पीजी के दौरान भी, यूजी के दौरान भी, उस किताब को जहाँ से कुछ लेना देना है। डॉक्टर सुनो जी सर, हम अपना व्यू रख रहे हैं सर। आई एम टेलिंग वेरी सीरियसली, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड ना क्या बड़ा बड़ा काम करो, छोटा छोटा काम सब करेगा। आई डिड FNSC टेस्ट एंड इट वाज सेमिनोमा, तो हम लिए 1000 रुपया और उसके बाद बड़का लेबोरेटरी को लाल किला में भेज दें, काहे के लिए? वो करेगा CA-125 बीटा SCG और वो लेगा 1800। किससे कौन कितना रिलेटेड है समझ जोड़ो। हमको हिमैट करने आता है इसलिए ये सर मेरे पास आया है। ये सर में किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, अपना काम करो यार, हिम्मत बांटो। हम तो कह दिए थे एट द आउटसेट, वी आर डूइंग क्लिनिकल, वी आर डूइंग हिमैट, वी आर डूइंग सर्जिकल। और दुनिया के अंदर में वो लोग जो कर रहे हैं या तो सर्जिकल पैथोलॉजी कर रहे हैं या हिमैट कर रहे हैं या क्लिनिकल कर रहे हैं, सबका रिलेशनशिप आराम से काम कीजिए। 2-4 आदमी जो साइन वाले हैं ना वो भी रहेंगे बाजार में, जहाँ 10 जगह साइन कर लेंगे। ओके, तुम अपना काम करो एंड डोंट बोदर। दूसरे को ठीक करने की जगह अपने ठीक रखो। और दूसरी बात कि जो लाइक माइंडेड पीपल दे शुड इंटरेक्ट मोर। बात है सर उनका सैंपल को खत्म करने का। खत्म तो ना होगा, चलो जो हम दे रहे हैं उसको खत्म करना। आप एग्जिस्ट करो, समस्या उनके खत्म करने का नहीं है, आपके एग्जिस्ट करने की समस्या है। एग्जिस्ट कर जाओगे तो खत्म हो जाएगा। एग्जिस्ट करो, एग्जिस्ट करो, एग्जिस्ट करो, पूरा करें, हम कंप्लीट करें। हम नहीं बोले इंटरप्ट नहीं करेंगे सर, प्लीज सॉरी सर। मेरा जो व्यू है कि आप जो मोस्ट ऑफ टाइम टीचिंग में पढ़ने में जो सीख रहे हैं ना, उसका पेशेंट में आप यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं छोड़ दें, अपना वो एक्शन करेंगे और हम केवल रिपोर्ट बनाकर साइन करेंगे। इसी के चलते नतीजा हुआ। हम जब बिहार से प्रैक्टिस करना शुरू किए तो हम किसी को ल्यूकीमिया बता दिए तो हमको क्लिनिशियन डायरेक्ट बोले तुम ल्यूकीमिया क्यों बोल दिया? हमने बोलते हमें क्या, हम बोले कि हमको कुछ ABC नहीं आता। हमसे पूछने आ गया कि कौन सी रिपोर्ट में लिखा है, तो उसको नहीं रहेगा तो उसको नहीं बताएंगे, रहेगा तो बताएंगे कि हाँ इसको ब्लड कैंसर हो रहा है। तो हम इस टाइप से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। मेरा जो स्पेशली पीजी लोग के लिए मेरा जो मैसेज है, जो मेरा मैंने क्या कहते हैं उसको दार्शनिक विचार जो है कि देखिए आपको पेशेंट को देखना पड़ेगा, आपको पेशेंट से अटैच होना पड़ेगा। मेरा एक लाइन में सीरियस बात है, हॉस्पिटल तो चलेगा ही चलेगा, उसमें लैब चलेगा ही चलेगा। काल की रात में आपको 12 बजे कोई पेशेंट आता है और उसको इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए आपके यहाँ कल 12 बजे तक नहीं इंतजार करेगा कोई, समझ गए? नहीं, बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं इंतजार करेगा, यूरिया LFT KFT सब के लिए नहीं इंतजार करेगा, वो अपने यहाँ करेगा। और मेजर पैसा आप उसमें आ रहा है, पेशेंट का पैसा आ रहा है, और उसमें चूंकि आप खाली साइन कर रहे हैं इसलिए आपको पूरा कमीशन देना पड़ रहा है, या तो अपने मशीन से कर रहा है। मेरा सीधे दो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आप लोग सब लोग पेशेंट से अटैच होइए। जांच भी मरीज या तो आप हॉस्पिटल में जाकर जांच कीजिए और वहां का पेशेंट भी दिखे जांच कीजिए, या तो खुद आप हॉस्पिटल खोलिए और आप जांच कीजिए और क्लिनिशियन से इलाज करवाइए। आपको पेशेंट देखना पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर है। क्योंकि इलाज में मोर देन 80% बायोकेमिस्ट्री का रोल है, ना कि आपको हिमाटोलॉजी का, साइटोपैथोलॉजी का या आपको हिस्टोपैथोलॉजी का। इससे 5 से 10% पेशेंट का इलाज हो रहा है। मेरा सिंपल व्यू है। अब देखिए 10 साल 5 साल के बाद हम जो बोल रहे थे वो कितना सा सही होता है गलत होता है बात की बात है, बट मेरा जो दिख रहा है कि ऑल पीजी के लिए स्पेशली कि आप पेशेंट देखते रहिए। जहां भी लगता है कि हम अपना प्रैक्टिस लैब भी चलाएंगे, पेशेंट भी देखेंगे। हम तो आप पढ़ते हैं तो उसके पेशेंट को सलाह देने के लिए कोई न्यूज नहीं है, लेकिन आपको बोला जाता है कि आप सलाह भी मत दीजिए। जैसे हम बोलते थे ना कि हाँ हम ल्यूकीमिया लिख दिए तो हमको मना कर दिए। हम तो खैर जैसे चलाते हैं कि हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, लड़ भी जाते हैं, जो कर लेते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं कर सकते हैं। बेस्ट वे है मेरा जो सोच है कि आगे चल करके जो भी पीजी है वो पेशेंट, आप अभी पेशेंट देखे हैं, पेशेंट देखना कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। उससे आपको कोरिलेशन भी होगा कि जो आपने जांच किया उसका फायदा क्या है, पेशेंट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अदरवाइज फिर आपको आप उसके पीछे पड़िएगा, सोचिए खाली जांच करके रिपोर्ट दे दिया, साइन कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया, तो फिर आपका वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। वही हुआ है। मेरा यही 2 मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। ये खाली साइन करने वाली बात हम लोग पासिंग रेफरेंस में नहीं करें और बड़े लाइटली न करें तो अच्छा है। हमारा पूरा लैब रेस्ट करता है इस फैक्ट पर कि हमारा एफर्ट कितना है। क्यों हम साइन करेंगे सिर्फ? वाई? क्या हराम का पैसा खाने का ठेका हमने ले लिया है?
क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? हम खुद करेंगे सारा टेस्ट। जितना टेस्ट पॉसिबल होगा वो हम सारा करेंगे खुद। टेक्नीशियन का काम सिर्फ सैंपल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग है, वो भी सारे में नहीं। क्यों? अगर हम हिस्टोपैथ और एफएनएसी कर रहे हैं तो हमको रूटीन यूरिन करने में शर्म आए, तब तो हम पैथोलॉजिस्ट करने लायक नहीं है। फर्स्ट आई शुड गेट माई बेसिक्स राइट। अगर एक रूटीन यूरिन का रिपोर्ट निकल रहा है मेरे दस्तखत से, बिना मेरे माइक्रोस्कोपी किए हुए, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। हम ईमानदार नहीं है तो दूसरे से हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप इमेजिन कीजिए कि विदाउट ऑटोमेशन और 4 आदमी अगर आप लैब में हेल्प करने वाले नहीं है, तो आप कोई भी इतनी सलाहियत रखते हैं कि दिन में 200 सैंपल हैंडल कर ले? आई वर्क इन माई लैब सिंगल हैंडेडली। आज तक मैक्सिमम पेशेंट जो हमने हैंडल किया दैट हैज बीन अराउंड 100। Say 60 to 70 samples is enough to keep a pathologist busy for the entire day. 100%. Provided you do all the work yourself. क्यों नहीं कीजिएगा? You have been trained for that. Your technician has not been trained to perform a urine analysis. वो सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए है। वो आप उसको पैथोलॉजिस्ट बना रहे हो। टेक्नीशियन बना के छोड़ रहे हो। आप हमारे यहाँ से कितने छोड़ के चले जाके और खोल लिए? सर अपने कर लीजिएगा तो बायोकेमिस्ट्री के रिपोर्ट में क्या चेंज कर दीजिएगा? हम बोले 80% बायोकेमिस्ट्री होता है, उसमें हम लोग अपने कर लेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? प्रोवाइडेड आप अपने से कीजिएगा ना डॉक्टर साहब, तब पता चलेगा कि उसके किए हुए बायोकेमिस्ट्री में और आपके किए हुए बायोकेमिस्ट्री में क्या अंतर करना बड़ा आसान है। बिना अगर आप करते हैं और टेक्नीशियन करता है तो बहुत कम अंतर है। आप कैलिब्रेशन को जानते हैं, आप एसडी डेविएशन जानते हैं, आप जानते हैं कि आपका सही कैलिब्रेशन टारगेट पे, ये कंट्रोल टारगेट पे आया कि नहीं आया। मॉर्निंग में सबसे पहले कंट्रोल रन कीजिए, उसके बाद रिपोर्ट दीजिए। मेरा दार्शनिक विचार है। दार्शनिक नहीं, अभी दार्शनिक विचार से नहीं काम चलेगा ना, प्रॉब्लम है। एक सिंपल सा चीज है, आप सीरम क्रिएटिनिन चला रहे हैं, उसके काइनेटिक ग्राफ में एक नॉच आ गया, आपका टेक्नीशियन को कुछ समझ में नहीं आएगा, वही रिपोर्ट दे देगा। वो एक चीज पूछते हैं, एक टेक्नीशियन को पता है कि लिक्विड केमिस्ट्री में क्रिएटिनिन में एवरी डे इट शुड बी एकदम बिल्कुल एंड कंट्रोल रन करना है। नॉट तो एक दिन का लेकर के चला देगा। I would say every batch sir, every day it has to be calibrated and controlled। रिपोर्ट किससे पूछा रहा? डॉक्टर प्लीज ऐसे मत करो। इट्स नॉट ए इशू हु इज डूइंग इट। If it is being done under my supervision, there Sorry is to nothing interrupt, wrong. sir, but we are crossing the line for. And I do believe कि मेरे टीम का आदमी चाहे वो MD हो या DC ही हो या वो टेक्नीशियन, how much he has been trained properly and how much he or she can do it, इसको आर्गू मत करो। केवल ब्लड शुगर 70 और 110 से केवल यही फाइंडिंग नहीं होता है, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा चीज है। राइट, तो आपके सुपरविजन में हो रहा है। यू विल डिसाइड यार क्या चीजें हमारे टीम के लोग करेंगे, कौन चीज हम करेंगे, कहाँ क्रॉस। आप साइन करो ना केवल रिपोर्ट, तुम लोग साइन पर बात कर रहे थे, मैं केवल साइन करता हूँ, कुछ नहीं करता। बट आई डू नो दैट द फाइंडिंग्स ऑफ यूरिन आर टू बी कोलैबोरेटेड विद द एलएफटी एंड केएफटी। यूरिन बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी पॉजिटिव है, वो नॉर्मल है, कैसे होगा? If you are putting all things together, साइन करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बशर्ते कि वाकई हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जमाना में आप जी रहे हैं। You are living in the era of electronic signature। अगर हम अपने से साइन करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सीबीसी हम देख रहे हैं, उसके बाद यूरिन देख रहे हैं, स्टूल देख रहे हैं। दे दो दूसरा पेन। उसका मतलब है हमने आज एक नया टर्म इस्तेमाल किया, दे दो जान के किया कि आपकी निगाह यूरिया क्रिएटिनिन पे भी रहे, आपका निगाह एलएफटी पे भी रहे, आपका निगाह थायराइड पे भी रहे,
आपका निकाह बोन मैरो डिप्रेशन और अदर डिसीजेस। ये इशू नहीं है कि कौन बिपिन इज रनिंग ए वेरी बिग लेबोरेटरी एंड वेरी बिग, कौन सा रिपोर्ट वहां से साइन करके निकल जाएगा, कहाँ हमको देख लेना है, ही नोज। इसलिए ये सब फालतू फालतू डिस्कशन मत कीजिए। एक चीज है कि माई वेरी प्रेजेंस इन द लेबोरेटरी फॉर लॉन्ग आवर्स एंड माई सिंसियरिटी, द सिंसियरिटी ऑफ माई टीम डज मैटर। तो ये उसको आप देखिए, छोटा छोटा बात में बहस में मत पड़िए। बहुत बातें बदल गई, बहुत बातें बदल रही हैं, बदल जाएंगी, तो इसलिए उसके अंदर आप मिलजुल के काम कीजिए। अभी आप बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, कहाँ गए मैडम? आपने क्या है एस्पिरेट किया एफएनएस, उसका रंग आया कुछ, आपने उसको ऑर्डर किया है माइलेज, वो बढ़ा हुआ, वो केमिस्ट्री है, और उसके बाद आपने सी पैरोटिड सेल्स सेफली लिखोगे, इट इज ए सिस्ट फ्रॉम पैरोटिड। कहाँ क्लिनिकल खत्म होता है, कहाँ एफएनएससी शुरू होता है? क्या तुम डॉक्टर होकर फालतू फालतू बात कर रहे हो? एक केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स है, क्या कर रहे हो? यू हैव टू सी द थिंग्स क्लिनिकली। तो वो एमाइलेज पहले भी तुम देखा था, एक पेशेंट को एमाइलेज लाइपेज दोनों ऑर्डर है, एमाइलेज बढ़ा हुआ है, लाइपेज नहीं बढ़ा हुआ है, क्या मानेगा बता? एमाइलेज नियर नॉर्मल है, लाइपेज बहुत बढ़ा हुआ, बता क्या है? वो टेक्नीशियन बताएगा। You take the proper history. You know that pain abdomen history or 5 days. So amylase is up, lipase बाद में बढ़ेगा। लाइपेज बहुत बढ़ा हुआ है, एमाइलेज साधारण बढ़ा हुआ है। हिस्ट्री लोगे, 1 महीने से दर्द कर रहा था, एमाइलेज गिर गया है, लाइपेज बढ़ा हुआ है, ये टेक्नीशियन बताएगा। लाल पीला वाला कि तुम बताओ केमिस्ट्री। हाँ मैं छिल रहा है। तो ये जो लाइपेज और एमाइलेज किए और उसके आधार पर तुम पैंक्रियाज पैथोलॉजी बताओ, ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। तो इस तरीके से बच्चा के साथ बात मत करो। एक मम्स का पेशेंट है, गाल फूला हुआ है, अब तुम एमाइलेज लाइपेज किया, एमाइलेज बढ़ा तो ठीक है, लाइपेज बढ़ा इसका मतलब पैंक्रियाज का इशू है। तब बताओगे कि दिस ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, दिस वायरल प्रॉब्लम हैज गॉन टू द पैंक्रियाज, मे बी टेस्टिस, मे बी इनफर्टिलिटी। ये तुम बताएगा कि टेक्नीशियन बताएगा? बिना मतलब के फालतू फालतू इशू खड़ा करता है, यूरिन कौन गर्म किया, कौन ठंडा किया, यही पे बात करने के लिए बैठे हुए। थैंक यू सो मच सर। Sir, can we proceed with the function? स्टूडेंट जैसा माइलेज लाइपेज हो गया। हाउ मेनी ऑफ अस नो कि दोनों का अलग अलग वैल्यू है? हाउ मेनी ऑफ अस? इसको बार बार सीखो, बार बार अपने ही कलीग के पास करने की तैयार। हेलो सर, आप ही का बात बोल रहे थे ना कि पेशेंट से अटैच हुई है, ये तो हम बोले। थैंक यू सर। Sir, it's like we are nearing the lunch time, so we should progress with the function. So, like after such intense discussion in the auditorium, we come to an end to the scientific session for today and for Bapcon 2023. Thank you all the participants for being here. We all deserve a round of applause for ourselves. Thank you. So now moving on to the next segment, we have valedictory function and award presentation ceremony for the poster and paper presentation held at Bapcon 2023. So for this, I'd like to invite the dignitaries, Virendra sir, Chairman Scientific Committee, Bapcon 23. उसमें रह जाए निकाल उसको बंद कर देना, स्विचर है वो सब। बैकड्रॉप डालना। So I'll start with the oral paper presentation awards. So the first prize for oral paper presentation goes to Dr. Shahin Parveen, KMC Katihar. Can we have a round of applause for her, please? Please do come and collect your certificate and award. Dr. Shahin Parveen.
I would request the President Bapcon IAPM Bihar Chapter 22, Dr. P.K. Chaudhary sir, to kindly grace the dais, and present Secretary Dr. Kumar Sunit sir. And I would also request the next President for Bapcon, the next tenure, Dr. Virendra Prasad sir, to be on the dais, and Secretary sir, Pranav sir, to kindly grace the dais. Dr. Pranav Verma sir, to grace the dais. हाँ तो बोलो कि उठा के बांस लगे गिरा दो हाँ सामान गिराया जाए तो नहीं Continue with function, sir, please. Dr. Shahin Praveen, first prize oral paper presentation from KMC Katihar. This is Dr. B.P. Mishra Award presentation. This is since long time. There is a medal and some token amount of 5,000 rupees. I am very happy. I am highly thankful to you. Good amount to I party. bless you. I bless you. Please, this is certificate. भाई देव what was her paper? Headline बताओ कौन सा? हाँ हाँ आके खोलना Biomedicine and sulfomycin study on gallbladder, dysplasia, malignancy or not. That's it. This was a good. Thank you. For next prize, this is Aroma Bharadwaj, Dr. Aroma Bharadwaj from NMC Sasaram. अरे लड़का तो बिल्कुल पीछे रह गया रे हाँ हाँ लड़का सर रहेगा तब ना। पढ़िए नहीं रहा था हाँ ये नहीं है बदमाश हो हाँ ना निकल 2 मिनट ठहर जाओ जाके For third prize, Dr. Zara Naseem, NMC Sasaram again. सब आराम से खुलेगा पहले टीवी वहाँ से मंगवा लो सुनी तो बोलेगा रुकेगा उसके बाद ये जाएगा तो पहले उसको गाड़ी मंगवा लो अच्छी से भेज सकता सुनी तो भी रुकेगा Last prize, the fourth place goes to Dr. Tripti from PMCH Patna. Kindly come here, guys. The next segment would be for posters. Can we have a round of applause, please? Now we'll start with the poster segment.
the award for the best poster goes to Dr. Sneha Kumari, KMC Katihar. Second place in poster presentation goes to Dr. Ekta Kumari, RIMS Ranchi. Ekta Kumari. She's not here. Ekta Kumari is not here. राजेश की चाहिए नहीं. Anyone from RIMS Ranchi? नहीं. As Dr. Ekta Kumari is not in the auditorium, Dr. Rakesh sir will connect on her behalf and it would be forwarded to her. on behalf of Dr. Ekta Kumari. Third prize goes to Dr. Deepshika Mittal from NMC Sasaram. Deepshika Mittal. Fourth prize goes to Dr. Birender Kumar Jha, NMCH Patna. Fourth place, poster presentation, Dr. Birender Kumar Jha, NMCH Patna. सर्टिफिकेट वाले आपको दे देंगे. This time only one nomination was filed for the post of president and Dr. Birender Prasad was elected unopposed. ठीक है. आवाज इतनी काफी है कि पहुंच जाती. Dr. Birender Prasad was elected unopposed as the next president of IIPM Bihar chapter. The certificate. Dr. Pranav Kumar Verma. Dr. Pranav Kumar Verma is going to be the next secretary of IIPM Bihar chapter. Very. For the next year, we have a new treasurer for IIPM Bihar chapter, Dr. Mukesh Prasad Saab. Please come over to the stage. ये कहाँ के काम करते हैं? भागलपुर. वाह, भागलपुर. चलिए ठीक है. आप लोगों की टीम का भागलपुर जाएगा. Now our new treasurer.
Just 1 minute. एक मिनट 2 मिनट ले लें As I hand over the secretaryship to my younger brother, Pranav, there are a few reminiscences of the last year I would like to share. As you all know, all the academic activities were put on hold for last 2 to 2.5 years. Everything was put on hold. Last year we started to kick back things with 2 CMEs, and then this conference with an enthusiastic team from Nalanda. I think they did not spare any effort, and this conference, in the eyes of most, has been a grand success. More than anything else, I'm very proud to say that we have been able to provide a decent platform for the pathologists and microbiologists of tomorrow. They are our future, and our endeavor should be to provide them maximum opportunities. Before I end, I have a few words for my successor. A few tips as a secretary, may I say. As a secretary, you will have to face a few situations during your tenure, and that will require some amount of patience to handle. And that does not mean that you don't be affirmative. When you need to put down your hand, put it firmly. Listen to everybody, but be firm on your conviction. There will be a few troubles here and there. This time the conference was conducted very smoothly, barring maybe a few hiccups. That is bound to occur. That will occur. In any association, we have to take that in stride, not giving that much importance. That isn't our agenda, you see. Our agenda mainly is to further the academics and to look after the interests of us, the pathologists and microbiologists. I wish you all the best. Best of luck. I hope IFPM will grow further and reach further heights under your stewardship. Congratulations again. On that note, we are almost at the end of Bapcon 2023, and I would like to, on a special request, I would like to invite Dr. Manohar Lal from NMCH Patna, Department of Pathology. Sir, please come on the dais. Sir has to be felicitated by Dr. Virender, sir. Sir, please join us on the dais.
Thank you, sir. And last but not the least, the background workers who has incessantly worked hard throughout the last 1.5 days to make this event at this auditorium a successful one. I would like to thank all the UG students from the committee of organizing committee, UG organizing committee for Bapcon 2023. I'll not name them separately, but I'll ask every one of them to please come on a dais and collect their mementos from the principal of the institute. Please, can we have a round of applause for them? They have been working hard for the past 1.5 days and not to be seen at all. वहाँ बीच में जो है ना पहले फोटो ले लो। टोकन मोमेंट तो दो किसी का On this note, with the promise of a better and stronger conference, Bapcon 2024, we'd like to break for lunch. On behalf of the whole organizing team, I would like to say sorry if you had some hiccups and some basic problems. And thanks for making this conference a success. Oh yeah. अच्छा